नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम, हेलो दोस्तों. Welcome once again to your favorite YouTube channel stockincome.in, and we are back with our series of weekly market outlook. Weekly market outlook के अगले एपिसोड में आपका स्वागत है. We'll be talking about our analysis and prediction for the week starting 13th of February. Right? So here we go. As always, हमने इसको डिवाइड किया है सारे फैक्टर्स को, न्यूज़ और डेटाबेस फैक्टर्स वर्सेस टेक्निकल फैक्टर्स, और इन दोनों की बात करेंगे. हम एनालाइज करेंगे, देखेंगे इस हफ्ते में क्या हुआ और कोशिश करेंगे प्रोजेक्ट करने की कि नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है. दिस इज माय एनालिसिस फॉर द वीक. आई एम आलोक फ्रेंड्स, एंड लेट्स सी व्हाट आई हैव गॉट इन स्टोर फॉर यू फॉर दिस वीक. तो अगर हम मेन इंडाइसेस की बात करें तो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही पॉजिटिव रहे, बट एक्चुअली फ्लैट. Color is green, but the Nifty is positive only by 0.01%, which really means flat. Bank Nifty is 0.14% up, which is practically flat. So indices went up, went down, but ultimately ended flat for the week. Indian indices, US indices have shown some negative trend, nothing very significant, but S&P index is down by about 1.11%, and Nasdaq, the tech heavy index, is down by 2.41%. So यूएस मार्केट थोड़ा सा नीचे गया है, इंडियन मार्केट फ्लैट रहा है इस वीक में. FIDI डेटा की बात करें इस वीक का, सो FIIs फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स दे कंटिन्यू टू सेल, नेट सेलर्स रहे हैं 32,202 करोड़ के. DIs हैव बीन बाइंग 2,289 करोड़ के बाय किया है, बट फॉर द मंथ एज यू कैन सी ऑन योर स्क्रीन द FIIs आर नेट सेलर टू द ट्यून ऑफ 5,400 करोड़, a little more than that, and DIs have been net positive, net buyers for 6,453 crore. Right, so all काफी हद तक balanced है position, slightly in favor of buying. India VIX जो है volatility index, fear index has gone down sharply this week, around 12.74% down गई है, and 11.5% down गई है, and अभी it is hovering at the level of 12.74. Now 12.74 is a little low going by historical standards, so that shows too much calmness in the market, but it could be like a silence before the storm, as they typically say, right? तूफान से पहले वाली शांति साबित हो सकती है ये. मार्केट बहुत शांत है, हमने देखा कि मार्केट फ्लैट भी है. सो ट्रेडर्स को थोड़ा सा चाहिए कि दे शुड बी लिटिल मोर केयरफुल, बिकॉज ट्रेडर्स especially people who deal in options etc, the premium prices बहुत एकदम से जंप कर सकते हैं, अप या डाउन हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन विच वे द विक्स मूव्स. और जब विक्स एक बहुत स्क्यूड हो गई है, एक डायरेक्शन में चली गई है, तो देयर इज अ चांस इट कैन बर्स्ट सडनली इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम. सो माय रिक्वेस्ट, ट्रेडर्स बी केयरफुल, अदरवाइज नो प्रॉब्लम. Crude oil is down again for this week, right, and down 7.39%. इंडिया के लिए तो अच्छा ही है, बिकॉज इंडिया इज़ अ ह्यूज इम्पोर्टर ऑफ क्रूड, सो दैट हेल्प्स इंडियन इकोनॉमी रिड्यूस आवर आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, राइट. सो गुड फॉर अस. Important factor this week was India interest rate decision. See, Fed increased interest rate last week, and India has done something similar this week. In the RBI has hiked it by 25 basis point, so it has become 6.5% now. RBI is maintaining its stated policy stand of withdrawal of accommodation. See, what are they saying is हम accommodate करने के लिए markets को, growth को, हमने interest rates को कम रखा था. अभी they are withdrawing the incentives since markets are in good shape, economy अच्छा चल रहा है, ठीक चल रहा है, तो they are withdrawing the incentives. They are not saying हम actually increase कर रहे हैं, they are saying we just going back to normal, right? That is the kind of language they are trying to use. RBI has also projected 6.4% economic growth for the coming year 23-24, which is lower than 7% so far observed this fiscal. Inflation continues to come down 5.3%, so that's good news. On the whole, it seems that this could be probably, I am no god to, and I don't have any crystal ball to gaze, but then I believe this could be the last increase in interest rates for a while now. उसके बाद अभी शायद आगे इंटरेस्ट रेट इंक्रीज नहीं करे आरबीआई, उनके बिहेवियर से, उनके बॉडी लैंग्वेज से, उनके स्टेटमेंट से ऐसा लगता है, राइट. फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वर एट कंफर्टेबल लेवल ऑफ अराउंड $577 बिलियन, राइट. एंड इंडियन रुपी जो कि काफ़ी स्लिप हुआ, अगर हम अपने नज़रिए से देखें तो स्लिप हुआ इस साल, बट रियली स्पीकिंग इन कंपैरेटिव टर्म्स इट्स बीन अमंग द लीस्ट वोलेटाइल एशियन करेंसीज
in this year. So that's good news for Indian economy. That's why I say Indian economy is doing pretty much well compared to what the world is doing right now. Okay, बहुत कंपनियों के रिजल्ट्स आए. हमने लास्ट वीक आपको बताया था कि इनके रिजल्ट्स आने वाले. आई एम श्योर यू केप्ट एन आई ऑन देम. सो टाटा स्टील सरप्राइज पीपल बाय ऑफरिंग बिलो एक्सपेक्टेशन रिजल्ट्स, बट almost everyone else had in-line to positive results. So whether it's Bharti Airtel, Adani Ports, Ambuja, Hero MotoCorp, Hindalco, Mahindra and Mahindra, everyone posted good set of numbers, right? Somewhere in line or above expectations. So that's good news for the economy. Things look good and stable, no need to worry. Markets had been volatile in the previous week because of that Adani saga. That does seem to be settling there. लगता नहीं है कि इसमें ज़्यादा कुछ बचा है, तो जो होना था हो चुका है. Things are becoming normal. People have accepted things as they are. टेक्निकल्स की बात करें और उससे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर. सी दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पसेस. आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर एंड नथिंग आई से शुड बी टेकन एज एन एनी एडवाइस टू सेल और बाय एनीथिंग इन द फाइनेंशियल मार्केट्स. यू नीड टू डू योर ओन रिसर्च और कंसल्ट अ सर्टिफाइड सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर. आई डू दिस एनालिसिस फॉर माई सेल्फ सिंस आई एम अ रेगुलर ट्रेडर. मैं रेगुलरली ट्रेड करता हूँ और इन्वेस्ट करता हूँ इंडियन मार्केट्स में, तो मैं अपने लिए एनालिसिस करता हूँ एंड आई शेयर दिस एनालिसिस विद यू फॉर लार्जर गुड. आई होप sincerely that it will be of huge use to you. At the same time, this is only for educational purposes, no any recommendation to buy sell. Okay, so let's move. Nifty का डेली चार्ट हमारे सामने है. लेवल्स हमने मार्क किए हैं जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल हो सकते हैं. राइट नाउ निफ्टी इज अराउंड 17,850. इट हैज क्रॉस द ह्यूज रेजिस्टेंस ऑफ 17,800, राइट, एंड सो वो एक अच्छा रेजिस्टेंस क्रॉस किया, उसके ऊपर ट्रेड कर रही है, but then doesn't show too much strength also, struggling to go up. Yesterday for example, कल जो है परसों के हायर से ऊपर भी नहीं जा सके, इनसाइड कैंडल बना आपका, right? So we don't know where it is going. It looks like it's going nowhere. The chart tells me it's in consolidation phase. आपका विक्स भी डाउन है, इसीलिए it may not go anywhere for some time now. It might be in a tight range. My outside range for my predicted outside range for this week is 18,260 on the upper side and 17,400 on the lower side, but I feel it could stay even in a narrower range than that, right? अगर निफ्टी ऑप्शन चेन की बात करें तो आप देखेंगे कि 17,800 पे मैक्सिमम पुट ओपन इंटरेस्ट है और 18,000 पे मैक्सिमम कॉल ओपन इंटरेस्ट है. दोनों में इजाफा हुआ, दोनों में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है रिसेंटली. सो दैट इटसेल्फ शोज के most traders are expecting Nifty to stay between 17,800 to 18,000 or give and take 100 or 200 points, right? So narrow range projected for Nifty this week, right? Okay, and before we talk of Bank Nifty, let me remind you we are present on multiple social media. Not only on YouTube, we are present on Instagram also, we are present on Twitter also. Twitter पे आपको daily morning में update मिलता है market का, our forecast for our projection for the market. On Insta you get on an everyday basis market close होने के बाद आपको हमारा एक रेगुलर सीरीज चलता है मार्केट स्टूडेंट टुमारो, wherein we talk about the markets, how they perform today, what are the key factors and what are the things likely to be there next day. So do watch that, do subscribe to that, do press the notification icon. And not only these updates and analysis of the market, we do post lot of learnings. बहुत अच्छा learning का systematic scientific material आपको मिलेगा इन channels पे. So I think it's a good idea to go there and subscribe to follow these channels, right? Okay, बात करते हैं Bank Nifty की. See, Bank Nifty is also showing a very similar pattern. It had underperformed in the previous week and now it's at par और अभी थोड़ा सा consolidation phase ही चल रहा है. Right, I feel on an outside basis it should stay in the range of 39,800 on the lower side and 43,600 on the higher side for this week. बैंक निफ्टी का बहुत इंटरेस्टिंग ऑप्शन डेटा ऑप्शन चेन है. अगर आप देखेंगे तो करंटली इट्स अराउंड 41,500, राइट, अ लिटिल अबव दैट. मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट on the call side as well as the put side is at that ATM level at 41,500, which means market participants are not expecting the Nifty Bank Nifty to move too much, so stay in the range again. So narrow range predicted for Bank Nifty and it may not move so much. That's how data is suggesting right now. So friends, this was my opinion analysis for the week that is starting on 13th of Feb. I hope you liked it. I hope you find it useful. Do share your comments. Do share your the channel itself with people whom you think could make use of it. And thank you for your time, for being with us. Thank you for your likes. God bless you. Happy trading. Happy investing. Jai Hind.